संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रितु सेठ आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को तहे दिल प्यार। प्लीज फॉरगिव द मिस्टेक्स दैट आई मेक। हम तो त्रुटियों के लिटरली पुतले हैं। थैंक यू गुरु जी। साल का एंड आने वाला है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अंकल। थैंक यू बड़ा मंदिर। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू थैंक गुरु जी। इन्ना कुछ साडे वास्ते कर दे जिन्ना शुक्राना करिए और ना काटे। गुरु जी का सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को गुरु जी उससे कल्याण हो जाता है। बड़े मंदिर जहां गुरु जी ने 12 ज्योतियों की शक्ति दी है, is for me it is everything on earth। जिन्ना शुक्र करा और ना काटे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ उथे ही मिलता है। लंगर प्रसाद। थैंक यू टू बड़ा मंदिर, थैंक यू टू मैनेजमेंट, थैंक यू टू गौरव जी जिनका आज जन्मदिन है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि रब दी दरगाह च उन्हां दा शुकराना करना आज मैनू मौका मिल गया है। I won't say my journey, I'll say Guruji started my journey with him in physical form was 2005, I think March 4th या 5th से। He first took me to Amarnath जब मैं barely 9 साल दी सी, 8-9 साल दी सी। When I first went to Amarnath, and that is known as Shivji Ji's abode। शिवजी जी इश्क है, शिवजी जी जनून है, एंड गुरु जी ही शिवजी जी हैं। 2005 4th या 5th मार्च गुरु जी कॉल्ड मी टू हिम, एंड जब मैं उन्होंने वेख्या एम्पायर स्टेट गए। माय हस्बैंड वाज फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स इन श्रीनगर, एंड he asked me, he said किधर जा रही है? I said I was going for my friends गुरुजी। तो मैं क्या, मैं अपनी फ्रेंड गुरुजी नु मिलन जा रही हां। He said ए कोई टाइम है गुरुआं ते जान दा, because it was around 7:30 in the evening, and we are used to going to gurus and seeing them in white cholas from before Pakistan days. My family used to go to Baba Lal Dayal ji, and we have always seen them only in white chola, and sham vele te kam hi jaida hai, swere hi jaida hai, but Guruji is rasak viragi guru, and he knew that sare asi kam karke he used to call us to him. And when I went there, Sangat ji, bahar inni khushbu aa rahi, bahar sadak tak outside Empire State sadak tak khushbu hi khushbu aa rahi, and I'm thinking ki being a Fauji's wife and a Fauji's daughter-in-law, I'm thinking कि इन्होंने पूरा air freshness छिड़क दिया, like when the seniors come and we would do up the mess, we used to spray all air freshness। तो बड़ी बाहर तक इन्होंने air freshener डाला हुआ है। Little did I realize, so when we went in, and my friend, she's Gurji was sitting alti palti wearing Punjabi drain pipes and bush shirt, floral bush shirt, very bright, and he looked so young. And my friend, she pointed out to him and she said, meet my Guruji, enj karke hath karke, meet my Guruji. And I just looked at him, and I looked at her, and it was difficult for me to understand him as Guruji, because like I just said, Sangat ji, ki asi te
ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਚ and ਇੰਜ ਆਲਤੀ ਪਾਲਤੀ ਬਹਿ ਕੇ and I still remember a very old Sangat Colonel Joshi sitting at his feet and Joshi auntie standing near the kitchen door. Vividly ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ and Gurji suddenly when he was busy, he was talking to Joshi uncle, but एकदम अचानक ही उन्होंने अपनी इंज चेहरा ऊपर करके ना उन्होंने his eyes they rested on me and uh, my friend Olga, she told him, she said, Gurji ए मेरी सहेली है, मेरी friend है, she said. And Guruji ने end करके, when his eyes they bore into me, and that I didn't realize, that he is Lord God. Even then I didn't realize, because we, like I just told you, कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, we don't have the sense, and we are so lost human beings, and ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ but when his eyes they bore into me, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ MRI ਹੋ ਗਿਆ, X-ray ਹੋ ਗਿਆ, and there is no secret which is hidden from him. ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ as if every dirty secret of mine ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੀਰੇ ਅੰਦਾਜ਼, and literally because he is Lord Shiva, he is the third eye, and ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ he just gave his permission by waving his hand like this for me to enter his darbar. And Sanjay, when we went in and we sat down, and I remember Gupta uncle came there, cha prasad, छोटे glasses देन वास्ते. I looked at, it was about 8:45 बज रही सी से I just looked at मैं क्या, because 8:45 बजे था मेरे हिसाब नाल, being a Fauji's wife, it was not a chai time at all. तो मैं क्या, no thank you. Then my friend, she tells me, she said prasad hai. When she said prasad hai, I took the glass and Fauji style में थोड़ा छड़ देता थले. I didn't finish. I didn't पूरा नहीं पीता मैं. And my friend told me, she says prasad hai, पूरा पी लो. So I drank the full chai glass, and Gupta uncle shortly came again. Cha prasad फिर और, मैं क्या नहीं thank you. And little did I realize कि ये ते अमृत हैगा. इस चाय प्रसाद दी वैल्यू ते मैनू बहुत बरसा दे बाद पता चली, as my journey with Guruji kept unfolding and kept moving along. And shortly after that, Om Namah Shivaya started playing. Guruji अपना चोला बदल के he came out. He was looking very grand. But मेरे दिमाग के when I was a small girl, when I remember my father also being a Fauji, second 9 Gorkhas, Gogia Pasha, the world-renowned magician who's in the Guinness Book of World Records also. Gogia Pasha had visited my father's regiment. Like he was a miracle man. He was because he was known for that. And मेरे दिमाग के सिर्फ एक चीज आई, he's looking like he is looking like Gogia Pasha, the world-renowned magician. जिस तरह की ऐना ने तो पूरी दुनिया नु ही घुमा देना है. This is the thought, Sangat ji, that came to my mind. Actually, because वो तेरा बेगे ईश्वर है के, he is Shiv ji, he is Mahadev, he is the eternal energy, he is the most supreme energy. There is nothing beyond him. And he was आई दुनिया घुमान वास्ते सी, सारे दी किस्मत चेंज करन वास्ते, जो कोई नहीं कर सकता गुरुजी वही ते करन आई सी. एंड उन्होंने गुरुजी ने आकर के सिंहासन पे बैठे. Om Namah Shivaya started playing, and I immediately was able to connect with Om Namah Shivaya, because I was a very small child. जब तो I was a Shiv Bhakt, I had gone to Amarnath, and from the age of 13 I started fasting on Mondays. So ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Om Namah Shivaya खत्म होया, then my friend, she took me to
Gurji, and she said, Gurji, है मेरी friend है. He said, ना की है. But he, as you know, Sangat ji, he used to speak very fast. He said, ना की है. मैं क्या Ritu. He said, Ritu कौन छेती बोल. मैं क्या Ritu said. Now this छेती, I'll come to this again, how Gurji connects the dots. And he said, I said Ritu said. He said, then he looked at me as if, so I said, daughter of Colonel Roshilal, wife of Colonel Ashok, said daughter-in-law of me, and he said, बच्चे. I said, एक मुंडा है वो दुबई चेगा. He said, मुंडे दा ब्याह करते ऐश कर. These were his words to me, and then he waved his hand and he told me to go and have langar with Raghurai uncle sitting over there wearing a red cape and with all his cameras and all. I had never eaten langar like this. इंज थले बह के चटाई थे चार लोग की एक थाल तो खा रहे. Only that was Guruji's way of teaching us that we are all equal. And ते उन्होंने इंज बैठे थे रघुराय अंकल ने रोटी प्रसाद लड्डू प्रसाद. मतलब ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ. Can you imagine the beauty? But we didn't, at least I didn't realize that I'm sitting in Lord God's Sharan and eating langar prasad. It's so divine. And तो उन्होंने रोटी पाई हाथे च वगैरह लंगर खा के. My husband had called when we were just leaving and he said, where are you going? I said, I'm going with Olga to her Guruji. He said, कोई time है? That tension was already there. So I told, as soon as we finished langar, I went to my friend and I said, let's go back. She said, when you go to your chief's house, don't you go and thank him? एक टेंशन हो शुरू हो गई. मैं क्या अच्छा जी. ते बाहर गए अपा हाथ धो के अच्छी लाइन च लग गए. ते लोग की संगत जी दंड प्रणाम करके शुक्राना कर रहे सी. ते आई वाज स्टैंडिंग इन क्यू. जब मेरी बारी आई थी मैं सोचा, बिकॉज लाइक आई सेड इन द वेरी बिगनिंग कि अपा ते इंज यू नो we were so naive and so foolish. मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं. मैं कितने खलोते मेरे दिमाग में तो आया ही so young looking. I'm not going to touch his feet. वो तो गुरु जी है, रब है, ईश्वर है. उनके चरण which were outside, he just put them under his robe. तो मैं भी इंज हाथ जोड़ के thank you कह के चल दी. तो संगत जी, when I had been sitting over there ना having the chai prasad, तो मेरे मन में ख्याल आया सी छोटा कि आंदा है ना कि अच्छा let me test him कि whether he has any powers. रब मतलब कि like I said in the very beginning, ਅਸੀਂ ਤੇ त्रुटियां ते पुतले ਹੈਗੇ. ते मेरे मन में इस तरह ख्याल आया because my son had rung me up 2-3 days before and said, माँ मेरे ते जूते घिस गए, मेरा काम नहीं हो रहा. So when I was sitting over there, I just thought, I said, अगर तुसी if you have some power तो मेरे बेटे का काम कर दोगे. Sangat ji, it was a Sunday evening into a Monday morning. We came back. My friend, she left, and my son calls me up from Dubai, and he said, "Ma, I don't know what's happened, but the Sheikh has called me to Palm Strip Mall at 12 o'clock your time. राती 12 बजे." As little, that's good. Within 10 minutes, so he went. Within 10 minutes, he calls me back, and he said, "Ma, my work is done." And Sangat ji, I was flummoxed. I had only thought with Guruji Rab hai, Ishwar hai, so he reads, he knows what we want, what we are asking, what we need, and actually we should not asking for anything. That night he gave me darshan in my dream, and he said, "Aapke bete ka naam." I had not told him my son's name. Guruji is Rab, Ishwar, Shiva, Mahadev. He said, "Aapke bete ka naam Akhil Raj Seth hai." And this is a conversation that we are having in my dream. That was Sunday into Monday. And I'm saying, Ji haan. And he's saying, then he gave a very special blessing for my son. And next, so after that, the kam bhi ho gaya si.
And my husband and I, we had gone to Dubai, etc. Spent a couple of days with him. When we came back, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ that I want to go and thank Guru ji. And even then, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ it didn't dawn on me that Guruji is Rab, he's supreme. And I told my friend, I rang her up and I said, I want to go to your Guruji to thank him. So she just told me my husband had gone back to Srinagar. And my friend, she tells me, she said, sorry, I have somebody coming from Chennai. So you will have to go on your own. मेरे मन ने सी तो मैं this is after about 2 months, 3 months or so. So मैं अपनी मारुति उठाई and I zipped down to Empire Estate. Went in, followed the same procedure. And again, it was that, I wanted to thank him. This time, as we stood in the queue, as I stood in the line, I wanted to. मेरे मन ने आया कि मैं इन्हां दे चरण छू करके शुकराना करांगी ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੀਤੇ his feet were so beautiful. All the aunties who have pressed his or uncles who have pressed his feet know his feet were beautiful. So with my fingers, I just wanted to. I felt that his feet are so beautiful. मैनू लग्या कि उन्हां दे चरण कई. I should not dirty his feet. His feet were so beautiful. I just with the tip of my fingers, I touched his charan and did thank you and came back home. And Sangat ji saw the beautiful journey ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ. Shortly after I lost my husband, I will come to Cheti Day later. Then again, and ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ dream ਵਿੱਚ, then it is not it is if he comes in our dream, it is his darshan. There are ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ. And today there is actually like we used to do our Thursday Samadhi Seva, we used to do और मतलब इतनी लाइनें इतना रश बढ़ता ही गया. That is because it is not देखा देखी थे एक बार आदमी आएगा 2 बार आएगा 3 बार आएगा बार थोड़ी आएगा किधरों लोग की आंदे ने to have his langar prasad. And so he gave me darshan in my dream one day, and in that exactly the same dialogue, there's this in the dream he showed beautiful there's a mountain and ਉਹਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ with that जो ऐसे बड़ा सा वो रिकॉर्ड का नहीं होता जो when like our kith and kin they die and ऐसे करके register and he's looking at me with a big smile on his face and he's saying na kiye. And so again in that dream he's correlating to what actually transpired Sade, which in Empire State, and he's just turning the pages. And this happened after I lost my husband, and he's telling me, he said, "Na kiye something Ritu." He's saying, "Cheti bol Ritu kaun?" So I said, "Ritu Seth." And then again I told him, and then with his that same pen he drew up. There were bells that were ringing. And he showed there was a beautiful mountain. He drew such a beautiful house for me over there. And as my journey went along, I realized that, another naal, I realized that one should never ask him for anything. So
ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਰੂਪ में गुरु जी resides and it's so beautiful. Again, he in that blue chola jada hai, he gave me darshan in that, and he said, he asked me in my dream, he said, what do you want? I was dumbfounded because I was taken aback, and I just looked at him, and I didn't ask for anything, because as I was looking at him, telepathically I was telling him, "तो मैनू की पता कि मैं की मंगा तुहाडे कोल?" That time I had lost my husband, I had lost my mother and my father, and I was just looking at him, and and when he asked me, he said, "What do you want?" And I looked at him. I didn't ask for anything. That was the most unsettled phase of my life. मेरे को तो कुछ था ही नहीं, तो मैं फिर भी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि I looked at him and we were telepathically, I'm looking at him and telling him that ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कि what is good for me, मैं तो ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, this is so true. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗੋ। As he looked at me then and he went away, and every time he gives me darshan, he wakes us up, and as time unfolded, I realized that the best thing that I could ever have done was never asked him for anything, because he takes care of everything. एक एक चीज, health, wealth, happiness, relationships, और एक एक चीज ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I think it was 2010 end. So perhaps because I had lost so many people, so I was also mentally very disturbed. Naturally, it affects the physical being also. And somewhere in I think June onwards, मैनू लग गया कि मैं थोड़ा भी चलन ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। And I'm a sports person basically. The treadmill ਤੇ मैं I could not increase my speed more than 5, 6. Slowly ਉਹ 3 ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ। 3 ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ घुटने ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। मैं बड़े मंदिर गई, सिजदा ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ I looked at his ਸਿੰਘਾਸਨ and I looked at his ਸਰੂਪ at back, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, what's wrong with me? ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। That night he gave me darshan, because ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, he makes it so simple for us to ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਮੰਗੋ ਨਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋਡ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੋਡ horizontal me, ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ he was standing behind and he showing me ਕਿ how there is infection at different places in my body. Sangat ji, this was I think November 8th ਸੀ, 6th 7th 8th ਦਾ, around 6th 7th 8th ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ 2010। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ
सत्संग वास्ते लंगर खान वास्ते सेवा करन वास्ते मैनू मौका मिलन लग गया। एवरी सिंगल डे मैं कोई काम नहीं कर रही सी जद वेखो गुरु जी दे सामने झोली फैला के एंड मैनू कदे इधर लंगर प्रसाद सेवा this carried on and till about February 2011 एकदम मैनू इंज लग्या जिस तरह दी मेरी लत्तां ठीक हो रही ने my energy the pain had subsided ते मैं नॉर्मल टुरन लग गई मैनू कोई I stopped having that urge to repeatedly go use the restroom. My health started improving. ते by March end तक ते बिल्कुल ही मेरे पूरी I was feeling very much better. By April I was back अपना treadmill, back to my gymming, back to my exercise. तो जो कहते ना कि गुरु जी दे लंगर प्रसाद सब कुछ रखा है मैं ते हर वेले एक्सपीरियंस किया है एंड चाहे जल हो प्रसाद हो एक ग्राई भी ना छो पूरा अपना लंगर प्रसाद जब सानू मिलीदा है चाहे बेटा हो चाहे कोई भी नाल हो अपना कित किन कोई भी हो जेड़ा जब सानू प्रसाद मिलीदा तो आपा प्रसाद आपे ही सामने शुक्राना करके खाईदा है do not pass it do not unless you know that you have been asked to please pass because साडे हर एक दा कर्म अलग हैगा ते he blesses each thali for what the person needs that's what I understood because मेरे तो पूरा गुरु जी दे प्रसाद जो लंगर प्रसाद जो इतना कुछ पाया मैं एंड प्रसाद तो पहले प्रसाद की गल हुई तो मैं एक छोटा सत्संग ते कोई होंदा ही नहीं गुरु जी दे हर चीज ही बहुत ही बड़ी है ते एक सत्संग हो जल प्रसाद का मैं शेयर करना चाहनी हूँ since we are talking about langar right now शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी ते about 4 years back मैनू डेंगू हो गया सी ते I was admitted to Max Hospital. Okay, the doctor said that my son was also you know was staying with me in the hospital. तो मेरी हालत काफी खराब सी and doctor said that it will take about 10 days for me to so we were worried because Guruji had blessed us with a small baby girl in the house as well तो मैं क्या है तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई उस दिन शामी जब डॉक्टर दस के गया ते मैं गुरु जी नाल गल कर रही सी कहंदे ना गुरु जी दे स्वरूप दे नाल गल करो ते साक्षात तुसी गुरु जी नाल ही गल कर रहे हो शिव जी नाल ही गल कर रहे हो गुरु नानक नाल ही गल कर रहे हो शिव जी साई मतलब फॉर मी एवरीथिंग गुरु जी इज एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन and Sangat ji so that day I asked him in the night I asked him I said Guruji hai ki hai how am I to cope up with this so he showed a very very beautiful dream Sangat ji he showed कि मैं बड़े मंदिर च हैगी जबकि I was in the hospital admitted and very sick and he showed मैं बड़े मंदिर च हैगी and ऊपर जो शिवलिंग है इतना सोना शिवलिंग है it is like you go to Amarnath it is like that जो बर्फ का शिवलिंग बनता है बिल्कुल उस तरह ही हैगा बर्फ तो शिवलिंग बनता है हर साल मैं तो बचपन तो देख रही हूँ बिल्कुल इस तरह ही बनता है एंड गुरुजी शोड एंड पहले पूरा शिवलिंग के आसपास एंड घी प्रसाद से एंड देन ही शोड एंड शिवलिंग खुलता है जब शिवलिंग खुलता है तो उदो पूरा अमृत जिस तरह गंगा गुरु जी दे शिव जी की जटाओं में से जो गंगा बहती है ना ऐसे ही शोड दैट शिवलिंग तो विचों पूरा एंड गंगा बह रही है अमृत बह रहा है एंड Sangat ji he told me he said
अमृत पी, तू भी अमृत पी ले, रितु आंटी अमृत पी ले. And then he told me, he said, पानी थोड़ा पी, पानी खारा है, ज्यादा पीगे तो टिड खराब हो जाएगा. And he told me, and he like this, just like we have when we are in the school coolers, we used to drink like this, no, with our hands like this. ते इंज करके आपा पानी पी रहे ने, and लाखों दी तादाद विच लोकी जल प्रसाद पी रहे ने from the शिवलिंग, जिथों गंगा, जिस तरह शिव जी की गंगा बहती है, ऐसी शिवलिंग में बड़े मंदिर में से जल आ रहा है. एंड गुरुजी इज टेलिंग मी, ए सारा मैक्स हॉस्पिटल की गल है, एंड 4 साल पहले की गल है, 4 सवा 4 इंज. एंड ही इज टेलिंग मी, ही सेड, रितु आंटी, आई होप आई एम राइट अबाउट द टाइम, बट इट्स अराउंड द सेम टाइम. एंड ही इज टेलिंग मी, रितु आंटी, आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक. Next day when the doctors came, they told my son that I can go home, and they were surprised that everything was perfectly all right. And they told my son that you can take your mother home. I was very happy. Guruji is my doctor, my friend, my guide, my mentor. अपने खसम भरोसा, everything rolled into one. So he had said no, that he blesses the rich and the poor alike. So संगत जी, जेड़ा गुरुजी सानू खुआईदा है लंगर in बड़ा मंदिर. So when he told me this, I was just thinking, जेड़ा लंगर खुआईदा है गुरुजी सानू, he makes 4 of us sit together and eat from one thal. Of course COVID दे बाद थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी चेंज हुई सी. Now again with Guruji's meher, उन्होंने everything is coming back to its normal pace, and let's hope with his grace सारा कुछ normal ही रहे. जिस तरह गुरुजी कहता है ना कि I say that there is nothing beyond him, because he has given darshan in so many forms. मैं तो कभी जिंदगी विच सोचा नहीं सी that I will get to see such beautiful, once he showed such a beautiful, very beautiful dream. He showed very beautiful darshan दिता इन्होंने, ते इन्होंने दिखाया कि it's a moonlit night, and moonlit night it सारे like Radha Krishna, then he showed Shirdi Sai, he showed Ram Siya Ram, इनका दरबार, सबके ऐसे दरबार लगे, हनुमान जी, and there's a beautiful palace and marble palace, and सारे भगवान जी के दरबार उस पैलेस में थे. And it was such a beautiful sight, and it is a moonlit night. And उधर गुरुजी चलते ने, जिस तरह गुरुजी जदों चल रहे ने, ते it was so beautiful to see कि सारे जितने भी gods and goddesses, see, they were all, nobody was looking directly at him, but they were all standing in awe of him. And that was, it is so, मैं ते कदे, like I said, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ त्रुटियां ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈਗੇ, and ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ he has blessed us in every way. ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ. yes, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ
uh, and Guruji kade koi matlab kade he never gave us you know talks or lectures. He never did any of that. With him it was, and yet he is like knowing everything. सब कुछ each one of us, our aches, our pains, or like the journey that he has given us. Even the apate, we thank him also for the pains that he has given, because अगर वो सानू वो pains नहीं देंदे ते फिर maybe at least as far as I'm concerned, maybe I would have never even you know understood what okay what the journey is all about. There is such a immense growth. जिस तरह गुरुजी कहते सी शिव पुराण पढ़ो, मैनू ते गौरव जी ने शिव पुराण दिती सी in 2007 ते शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण जिन्नी बार कहते ना कि 5 बार ते कम से कम पढ़ लो. When we read the Shiv Puran, it is so much what Shivji ji is, what Guruji is, and completely and totally. मैं एक छोटा सा संगत कहते ना कि इन जद ਆਪਾਂ सुनीदा है कीर्तन शब्द सुनीदा है या सत्संग सुनीदा है ते the messages that we receive कि there are so many questions which sometimes we are in lost in things. कहते हैं ना कि सुनिए दाते we get so many answers, and so many times our problems are resolved. किसी और दा सत्संग भी सुनिदा. I hope my message is also help someone to understand whatever is, and सब जिस तरह गुरु जी कहते सारे सब दा कल्याण हो जाता है. ते एक बार I was in a dilemma as to मैं अपने मुंडे दा ब्याह कराना सी ते I was looking कि naturally being from a फौजी background ते मैं क्या चलो फौजी दी बेटी दे नाल ब्याह कराइए वगैरह. एंड मैनू तो जरा भी नहीं पता सी कि समझ ही नहीं सी कि कितने ब्याह कराना है क्या. तो इट इज दैट ऑल्सो मैं क्या बताऊं, मतलब फॉर मी तो ही हैज हैंड मी थ्रू ईच एंड एवरीथिंग. टुडे अगर जिस तरह कहते ना घर सुख वसिया, तो इट इज ऑल शुक्र 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 गुरु जी. मेरी ते even the daughter-in-law that I have in my house today, she is मतलब I think she's my daughter, because रब ने उन्होंने ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ. We are totally from an agricultural background. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ. I was looking at my husband's friends, children and all. And then he told me in my dream again, he said, Ladki, Punjab. He showed me a huge shivling. And then he showed me, he said, Ladki, he told me, he said, Ladki Punjab ki hai. And I'm wondering, ये पंजाब की लड़की कहाँ से आ गई. मैं तो I don't know anybody वहां से उस तरफ की लड़की. And then my son, he met this girl when he was working with Agni. And she just used to, she would call me. And I asked her, I said, her name was Vamika. And I asked her, I said, where are you from? She said, Karnal. ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈ. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ. That night he told me, he said, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹਦਾ ਪੁਸ਼ਤਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ I asked her next morning, ਰੋਜ਼ 9 9:30 she would ring me up. ਤੇ ਮੈਂ 9 9:30 ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁਸ਼ਤਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ. ਤੇ she's telling me, we belong to a village near Patiala. Again, I forget the name, Sarur, Sangrur, something. ते मैं क्या, oh, फिर मैंने I understood that लड़की पंजाब की है. And that same, it was, I think within about 2 or 3 days, I had come back from, we had our office in Shapojar.
And I came back after that, having been a teacher all my life, and uh, a Fauji's wife, so that afternoon power nap siesta had become a habit. I came from the office, and afternoon power nap I'm taking, and Guruji showed such a beautiful. It was, I think, around afternoon, and he showed me a beautiful dream. He showed that it's just a golf cart on the white. He is driving my cart, and a picture wali jadi seat hai, I'm sitting on that. And he turns around and looks at me, and he says, uh, you remember when he met me, he said, Cheti bol, when he asked me na kiye. So, and this he's telling me, he turns around and he tells me, he says, why is your speed so slow? This is in my dream when he has given me darshan, sakshat darshan. He's telling me, why is your speed so slow? And I used to, after I lost my husband and my mother, I used to always ask, uh, I used to do the Surya Namaskar, Surya ko jal dete hain. So I used to do that. And I used to always ask, and even much before that, even when we were in Leh Ladakh and all, I used to always ask for कि मैनू इस तरह दी लड़की देना who loves both my son and me, ताकि it's a small family, it should stay united, And ते मैं he's telling me, why is your speech so slow? She loves you a lot. And then he's showing me in the dream, he's showing that Mamika is holding my son's hand, and they are both and that time there was no marriage, nothing. But see, like Guruji jad mainu ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ what do you want, ਤੇ I was flummoxed, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ which was to happen so many years later. He showed me my children, my son married to the girl. He showed me the girl, and then he told me, why is your speech so slow? She loves you a lot. I woke up, and it was so beautiful. His presence was so strong. Because Guruji तो अपने स्वरूप में है. जब तक गुरुजी चोले तब तक everything practical होन जिन्नी जिद्दी श्रद्धा ओना ले जाए. One of the taxi guys who had come to Guruji's darbar, asking him his experience, this is what he said, and this is so true. This is so true. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ. And then he got my son married, and he said, then of course by then the girl told me she belongs to Punjab near Patiala village. I still don't know the name in a case. ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, and ਵਿਆਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ. And he had told me, he said 10-15 ਲੋग ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, and it was authenticated by another auntie who called me. Everything that Guruji tells us, jo bhi adesh dende ne, he will always authenticate. And it's a beautiful journey. Then he's telling me, he said, and my daughter-in-law's name is Vamika. And he's telling me, in my dream, he's telling me, he says, Ladki da na ki hai. And then he gave me a name for her. And he said, I have, that in Menu kende, and then Lavina. A rare name. मैं तो कभी सोचा भी नहीं सी. I call her only Lavina because, and I think it was meant for all the love that we share. And it is it's मैं तो जिन्ना शुक्र करनी है रब दूं ओना काटे. जिन्ना थैंक यू कहूं, जिन्ना इन्हां नू मैं ते मतलब इन्हां ने हर तरफों हर चीज इन्हां ने सॉर्ट आउट की देखी, एंड लाइफ इन्नी ब्यूटीफुल की है. हर वेले इन्हां नू शुक्र करीदा है. I can never ever thank him enough, and I only can say Guruji shukar shukar shukar. I thank Vikram uncle, Kunal uncle for giving me this opportunity. I thank Bada Mandir for this wonderful the way Bada Mandir is organized. Inni
संगत हो गई है, इन्नी संगत हो गई है, फिर भी ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਅ ਟੋਟਲ ਫੌਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਆਮ ਅ ਫੌਜੀ ਬ੍ਰੈਟ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, everybody gets ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ that he has given us is simply beyond words। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। And he used to all, ਗੁਰੂ ਜੀ always said, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਰਫਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਕਲ ਤੇ ਰਫਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ सब कुछ हैगा। बड़े मंदिर में 12 ज्योतियों की शक्ति है। मतलब अगर तुसी वेखो ते एक टाइम विच दवे जिस तरह लाइनां चलदियां ने, जिस तरह असी सारे ऐश करदे ने, उते it is something what it is not humanly possible। it is सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी दी मेहर है। And thank you so much that close of 2022 मैनू है opportunity दी थी। मैं ते हर दिन सिर्फ और सिर्फ अपने रब दा शुकराना करनी है, जो कोशिश करनी है ना मंगो, but then again being human sometimes we ask for things, you know, and एक चीज साडे गुरु देखते ने, एक what should I say, सब सॉर्ट आउट करदे ने। मेरी ते लाइफ दी डोर इन्हां दे हत्थ च हैगी, ते मैं ते सिर्फ शुक्र 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 करती हूँ। शुक्र बड़े मंदिर का, शुक्र मैनेजमेंट का, शुक्र गौरव जी का, शुक्र अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।